हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में क्या करे तुम? व्हाट वी हैव डन द लास्ट सेशन? वी आर फाइंडिंग द spectral radius, right? यस सर। Today we are going to start the topic which is called eigenvalues and eigenvectors. How to find out? Most of the students are waiting for this. Let us start eigenvalues and eigenvectors. See how to do. First question is question number one. We don't want any basic for this one. Find the eigenvalue and the corresponding eigenvector. Corresponding eigenvector. We'll do it one or two questions for this one because it will take a lot of time. This is a long answer. 7 marks question of the matrix of the matrix. If you take any question, as in first question, I am taking this one. 1, 0, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 3. This is your vector. What is the order of this vector? What is the order of this matrix? Come on. It has बाई three थ्री। rows. It has 3 rows and 3 columns. So let us start our work. Let us assume that A is equal to 1, 0, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 3. This is the vector we are taking. Now we should start with the help of the characteristic equation. The characteristic, I'm not writing the full form. Equation of A is the magnitude of A minus lambda I is equal to 0, which implies that, see, when you are doing A, you have to write this A. I'll tell you some rough work here. Here, the matrix A should be writing here, minus lambda into, here you should write the identity matrix, this one, 0, 0, 1. But after simplifying, what final answer I'm getting, that one I am writing here. The change in the diagonal only, 1 minus lambda, 0, 0, 0, 2 minus lambda, 1, 2, 0, 3 minus lambda. And this is your magnitude equal to 0. This is only for rough work I wrote, so no need. Okay. After that, we know the process of expanding the determinant. What is that? Can you tell me that? Plus, minus, plus. And here the advantage of this will be the rest of the two elements are 0. So when we expanding this one, 1 minus lambda into corresponding row and column we have to neglect. Get it? 2 minus lambda into 3 minus lambda. AD minus BC. That will become, second part will become 0. And now you see second one, this one. If you are doing anything with the 0, you're getting your answer will be 0. Second one like that. Minus 0 into whatever you are doing, 0. Plus 0 into whatever you are doing becomes 0. So what I am doing, I don't want to write this much work and don't want to waste our time. That is equal to 0. I hope you understand this. Okay.
Finally, 1 minus lambda is equal to 0 means we say our lambda value is 1, comma, lambda value is 2, comma, lambda value is equal to 3. All the three values are different. So then we say this is the problem of non-repeated eigen values. Non-repeated eigenvalues. Because all the three eigenvalues are different. I hope you understand this much part. Correct? Yes, sir. Yes. Now moving to the next part. That is, look at that. How many eigenvalues we got? 3, sir. 3. So for each eigenvalue, there exists at least one eigenvector. एक आइगन वैल्यू के लिए कम से कम एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट होगा. अपने पास आइगन वैल्यूज 3 है तो कम से कम 3 वेक्टर्स तो आते हैं. 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, कम से कम 3 तो आना ही चाहिए. केस 1, when lambda is equal to 1, where we have to substitute in this matrix. What happened to this matrix when lambda is 1? And we are assuming that corresponding eigenvector will be capital X1 is equal to X1, X2, X3. This is the corresponding eigenvector I am assuming for this value of lambda. मतलब क्या? Lambda is equal to 1 के लिए एक vector assume कर रहे हैं. We are finding now X1, X2, X3 values. So if you put lambda value is 1 here, what answer I am getting? Can you tell me that? 0, sir. Yes, very good. तो बोलिए आप ये इसको लिखेंगे आप 0, 0, 0. Here 0. If lambda value is 1, this is 1, 1, sir. 1. This is 2. This is 0. This is 2. You're getting my point. And then your variable matrix we have to write here. X1, X2, X3. What matrix we are assuming? That right hand side value is nothing. That is 0, 0, 0. Now after that, you can see our first row is entirely 0. So no need of that first row. Only second row and third row is useful. अब इसको अपन क्या करेंगे? We have to convert this into the equations. फर्स्ट की तो जरूरत नहीं, सेकंड में देख 0x1 प्लस 1x2 प्लस 1x3 is equal to 0. This is your equation number 1. Next 2x1 प्लस, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, 0 1 क्या को लिख रहे हैं, आपको सॉल्व करने आसान होता है उनके लिख रहे हैं. 2x3 is equal to 0. This is your second equation. We have to solve our equation number 1 and 2 to get the values of x1, x2 and x3. So let me solve it. Solving procedure एक बार देख लीजिए. x1 by middle sign is minus, second matrix with minus sign, middle sign is minus, is equal to x3 by middle sign is minus. तो जब भी आप x1 को solve कर रहे हैं, neglecting x1, we get this much only. मतलब ऐसा बनता आप ऐसा 1, 1, 0, 2. So then AD is 2 1s are 2 here, minus 0 into anything is 0. So write down 0. Now, when you are solving for x2, neglecting x2, we get 0, 1, 2, 2. फिर से AD minus BC करें. AD मतलब 0, minus 2. Like 0. This is AD 0. Minus is already I wrote. Minus 2. Now, finally, when writing for x3, 0, 1, 2, 0. This is AD is 0, minus 2 1s are 2. साथ आपको क्लियर है तो आप चले जाओ. हाँ, अगर डाउट है तो फिर रुको अभी आप.
x1 by 2 is equal to, see, this minus sign must be cancelled. x2 by plus 2, this is equal to x3 by minus 2. 2 ones up, 2 ones up, 2 ones up. Okay. Then capital X1 value we are getting as 1, 1 minus 1. और अभी मैं आपको बोला था एक वेक्टर के लिए एक कम से कम एक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप माइनस से मल्टीप्लाई करके, -1 प्लस, ठीक है, ये दोनों भी करेक्ट है। इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 2 भी कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। या देखिए एक बार, yeah, any doubt? Any doubt in this? सर Yes. सर आप इक्वेशंस लिखे ना सर, 1 and 2, हाँ, उसके बाद जो स्टेप किए ना सर डिनोमिनेटर में वो साइंस। सॉल्विंग इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशंस बोल रहे ना? नहीं सर, x1 x2 x3 डिनोमिनेटर्स में वो साइंस कैसे लिए सर आप, वो कौन सा साइन? कॉन्सेप्ट? ये पूरा, हाँ वो सर, हाँ। ये आप यहाँ पर से इसको मैं इरेज करके एक बार फिर से बताऊँ, देख लीजिए अच्छे से आप। ये तो आपको सेकंड एलिमेंट को माइनस साइन लगाना है, आप जरा देख लो अच्छे से। x1 कर रहे हैं ना आप? सर x1 के सर लिए वो सॉल्व कर रहे हैं। प्लस माइनस प्लस का ही फॉर्मेट ना सर वो? हाँ, प्लस माइनस प्लस का ही फॉर्मेट, डिटर्मिनेंट का ही ओके। फॉर्मेट, ठीक है ना। नाउ सॉल्विंग फॉर x1 मींस नेग्लेक्टिंग x1 वी गेट 1 1 0 2। इसका डिटर्मिनेंट करो आप, क्या था? वो समझ AD, में हो गया, समझ हो गया सर। वही करा था ना मैं अभी, आप वही करा फिर मैं जी। ओके सर, अंडरस्टूड। किधर बोल रहा है? 2 माइनस 0। हाँ, यहाँ पे भी true है, डायगोनल में माइनस कर रहे थे खाली, ऐसा करना चाहिए। हाँ, डायगोनली कर रहे थे। 2 ones are 2 minus 0, yes. For x2 we have to neglect, this is 0 minus 2, and for x3 if you neglect you'll get to 0 minus 2. These two minus sign are cancelled. अभी ठीक है ना, ओके ना? यस सर। Okay, the first part of this one is done. Okay, case 2 will do it. चले case 2 करेंगे। नम्रता नहीं है क्लास में? है सर, सुन रहे, समझ में आ रहा है, नो डाउट्स। Okay, no problem, thank you। Right, we'll go for case 2. Case 2, what is the case 2? लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 सर। Very good. Lambda is equals to 2. Same x2 value we have to take like that one. x1, x2, x3. Now this one again diagonally we have to subtract here. 1 minus 2. बोलिए 1 minus 2 minus 1, -1 0 0 0 0 0 as 0 it is. 0 2 2 minus 2 0 will 1। become 0. This is 1. This is 2 0. Only diagonally we are changing. 3 minus 2 is 1. Okay. Only diagonal में change करना है। x1 x2 x3 is equal to 0 0 0।
नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस. कोई तो भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेना. तो आई एम टेकिंग -x1. एक काम इसको कर सकते हैं शॉर्टकट में, कि अच्छा आंसर आ जाता. अगर आपको मैं करके बता दूंगा तो और अच्छा रहेगा. -x1 + 0x2. सॉल्विंग इक्वेशन का प्रैक्टिस भी हो जाता. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वी आर टेकिंग. कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आपका मर्जी. मैं सेकंड वाला नहीं ले रहा हूँ, उसमें भी ज्यादा जीरो है. थर्ड ले ली. 2x1 + 0x2 + 1x3 is equal to 0. This is the equation number 2 I am taking. Solving this. x1 by -x2 by x3 by. Now x1 neglecting AD. 0 into anything is 0 minus 0. x2 मतलब x2 को नेग्लेक्ट करके सब -1 जीरो आ रहे सर डिनोमिनेटर में. हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. -1 and this is 0. x3 value, x3 neglecting 0 -0. तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था वहां पर, अगर आप कंफ्यूज होगा मुझे नहीं कर. ये देखिए, ये माइनस साइन कैंसिल. तो x2 वैल्यू इज 1, x3 is again 0. So what vector we are getting? Can you tell me that? 1, 0, 1, 0. Right? x2 सेकंड वेक्टर पे आ गया. थर्ड वेक्टर केस 3. केस नंबर 3. सर एक बार केस टू बताओ सर. हाँ बोलिए, डाउट बोलिए आपका क्या है. सॉल्विंग इक्वेशन. हाँ सर, इट इज कंपल्सरी टू टेक -x2 ना सर वहाँ पे. या सेकंड एलिमेंट शुड बी माइनस. हाँ Determinant, ऑलवेज. nothing but determinant. Yes, always minus. ओके. Okay. So then moving to the third case. Lambda value is 3. And capital X3 will be taken as, same thing I am taking. X1, X2, X3. What the answer of Stokes theorem? Okay. So when lambda value is 3, look at that. What is the changes? 1 minus 3 means -2. -2, 0, 0. When lambda is 3, 0, -1 plus 1. सर एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर वो केस 2 में मुझे तो पूरे जीरो से आ रहे सर. एक बार कहाँ चेक से आ रहे जी? यहाँ कीजिए. पर देखो ना जी, x2 बोलते हो, x2 नेग्लेक्ट करो. -1, 1 से 1 आ रहा, 0 किधर आ रहा? देखो आप, x2 की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है. ठीक है, तो क्या बचता है आपको ओके सर. मैट्रिक्स? ओके ओके सर. ओके सर. मैं कर दे रहा हूँ ना, बाद में आप उसको प्रैक्टिस करो, अभी नको करो. अभी आप खाली सुनो, ओके. ये क्लास पूरा सुनो पहले, इसके बाद मैं आपको डाउट सेशन देता हूँ. जब करो 0, -1 + 1. ओके, 0, -1 + 1. नेक्स्ट 2, 0, 3 - 3 is 0, मतलब 2, 0, 0. Here we will get it x1, x2, x3 is equal to 0, 0, 0. Now solving. कौन से दो इक्वेशन लेना बोलो आपने? अब देखो आप, रो 1 एंड रो 3 आर ब्यूटीफुल रोज, क्योंकि माइनस और प्लस का डिफरेंस है. अंडरस्टैंड? So don't take equation number 1 as first row and equation number 2 as third row. उसको सॉल्व करें तो फिर आंसर आपको 0, 0 आ जाता. बेटर टू टेक 1 and 2. -2x1 + 0x2 + 0x3 is equal to 0 is the first equation I am considering. Next 0x1
minus 1x2 plus 1x3 is equal to 0. I'm considering as a second equation. अभी अभी कोई स्टूडेंट डाउट पूछे थे सॉल्विंग इक्वेशन में हमेशा से मिडिल साइन माइनस आना है. अंडरस्टैंड? मिडिल साइन मस्ट बी माइनस ओनली. नाउ नेग्लेक्टिंग x1 देख लीजिए अच्छे से. 0 into anything is 0 minus minus 1 into anything that will be 0 again. Neglecting x2 minus 2 ones are minus 2 and 0 into anything is 0, so minus 0. Neglecting x3 minus into minus plus 2 ones are 2 minus 0. x1 by 0. This minus sign cancel. x2 by 2 minus 0 is 2 itself. x3 by 2 minus 0 is 2 only. We can cancel it. 2 ones are 2 ones. Finally, the value of x3 will be what? 0, 1, 1. Again, तीनों भी vectors आ गए. So for 3 eigenvalues, we are getting minimum 3 eigenvectors. This is the concept of eigenvalues and eigenvectors. एक बार मैं शुरू से फर्स्ट पेज ओपन करता हूँ. नहीं तो भी डाउट है तो बोलिए. नहीं डाउट नहीं है सर, सब कुछ क्लियर है. Then I can move to the next. क्लियर है सर. चलिए राइट. नेक्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट पे हमने एक ही क्वेश्चन करे. देखिए अब तक करे, अभी ज्यादा नहीं करे हम, एक ही करे. अभी आपको एक क्वेश्चन आ सकता सर एग्जाम में, अगर आपने 4x4 का अगर मैट्रिक्स दे दिया तो उसका डिटरमिनेंट कैसा करें. एक क्वेश्चन शायद आपके माइंड में होगा, तो उसको वो क्लियर करने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. Examine means it may be linearly dependent or linearly independent. Examine the linear independence of, मतलब आप क्वेश्चन में लीनियर इंडिपेंडेंसी बोला तो नॉट जीरो चाहो. लीनियर independence of the given vector. कल की क्लास में शायद अपन करे थे ना 3x3 मैट्रिक्स का लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है यस सर. अगर एग्जाम में आपको 4 में पूछा सपोज, तो फिर सर नहीं कराए बोल के मत समझो, मैं सब कुछ कवर कर दूँ. 1 1 0 1 1 1 1 1 minus 1 plus 1 plus 1 plus 1 and here 1 0 0 1. चार मैट्रिक्स है, 2 rows 4 कॉलम के मैट्रिक्स है. Okay, we are going to check whether it is linearly independent. Proof करना है. Simple solution, what will we do? Directly we take this matrix is equal to capital X. Determinant direct कर देंगे. 1 1 0 1 1 1 1 1 minus 1 plus 1 plus 1 plus 1 1 0 0 1. अब देखो हमेशा से यही रूल रहता, सेकंड एलिमेंट शुड बी माइनस. प्लस माइनस प्लस माइनस. ओके, सो व्हेन एक्सपैंडिंग विथ 1, ये 1 का करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो नेग्लेक्ट कर देंगे. क्या बचता बोलो? 1 1 1 1 1 1 0 0 1. सेकंड एलिमेंट माइनस से, फिर कॉलम एंड रो नेग्लेक्ट. ये बहुत केयरफुल करना. इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो नेग्लेक्ट. 1 1 1 minus 1 plus 1 plus 1 1 0 1. राइट है. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो वाला काम नहीं कर रहा हूँ. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी. 1 से करेंगे. 1 1 1 minus 1 plus 1 plus 1 1 0 0. नाउ जब आप इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, अगेन वी हैव टू अप्लाई प्लस माइनस प्लस because it is a 3x3 matrix again.
अब थोड़ा डायरेक्ट करने का अलाउ करिए. 1 into column and row neglect AD लास्ट 1 1 1 minus सर 0. लास्ट में वहाँ पे -1 आना ना सर. इसमें जी column and row neglect 1 1 1. Yes, it is correct. -1 plus 1 1 1 तो बराबर ही है ना. यहाँ पे सर हाँ -2 हाँ, राइट माइनस. राइट 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 राइट. यहाँ पर आपको हाँ. -1 करेक्ट है अभी. हाँ. ठीक, चल कंटिन्यू. Oh, this is 1 1 minus 0 minus 1 into column and row neglect 1 1 जा 1 minus 0 plus 1 से फिर 0 minus 0. एक काम हो गया. फिर -1 से फिर 1 से AD 1 minus 0. क्या डाउट है? हम्म, क्या है? -2 आउटसाइड. -2 आउटसाइड. तो कॉलम एंड रो नेग्लेक्ट बराबर ही जा रहा है. -1 इंटू अगेन कॉलम एंड रो नेग्लेक्ट. इसमें देखो टर्न करो पेजेस इधर उधर है ऑर्डर पेजेस. 1 -1 से ये -1 ये माइनस AD -BC फिर +1 से कॉलम रो नेग्लेक्ट 0 माइनस. सर एक बार ये कैलकुलेशन फिर से बोलते सर. कौन सा ये? हाँ क्योंकि हाँ सर ये वाला 1 यहाँ पे लिए ना सर, फिर ये वाला क्यों नहीं ले सर. मैं एक मैट्रिक्स को ना रफ वर्क करके बता देता हूँ आपको. हाँ, तो पूरों को नहीं करता हूँ, एक रफ वर्क अच्छे से करके बता देता इधर. ये मैट्रिक्स. हाँ, 1 1 1 1 1. ये आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो डिटर्मिनेंट. ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता दे सर रहा यहाँ पे फर्स्ट डिटरमिनेंट जो 1 का कर रहे ना सर, वहाँ पे 1 तो बाहर का लिख लिए, अंदर भी 1 लिखना ना सर. हूँ. 1 इंटू एनीथिंग 1 ही होता है, अच्छा ठीक है. इसलिए नहीं लिखा हूँ. अभी मैं करके बता दे रहा हूँ एक मैट्रिक्स. आप 1 कैसा करते हैं देखो. डिटर्मिनेंट कॉलम रो नेग्लेक्ट करके लिखना है. -1 से फिर कॉलम एंड रो नेग्लेक्ट करके actually as an engineering student you should know this. 1 into 1 1 is 1 minus 0 minus 1 into 1 1 is 1 minus 0 plus 1 into 0 minus 0. Finally our answer is 1 minus 0 1 1 1 a minus 1 plus 1 plus 1 minus 1 cancel. Answer of this determinant is 1. पूरा सॉल्व करे बाद 1 आ जाता. तो मैं शॉर्टकट में बता दूं आपको. ये पूरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. ओके, लेट मी डू इट. कर लेंगे. फिर 1 से कर रहे देखो हम. कॉलम एंड नो नेग्लेक्ट 0 minus 0 -1 into column and row neglect 0 minus 1. And then from +1 if you are doing what happened, tell me. 0 -1. ये डिटर्मिनेंट आप लोग अच्छे से परफेक्ट कर लो भाई कहीं तो ये मैट्रिक्स का आंसर आपने को मैं इधर करा था रफ वर्क में, इसलिए 1 लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली. -1 into this is 1 only. ये -1 -1 -2 minus into minus +2. ये -1 into again. This is 0 minus 0 0 into anything is 0. Minus into minus +1. A minus. A +1 -1 cancel. 0 into anything 0.
ये -1 +1 cancel. 1 -2. Answer is -1, which is not 0. Therefore, given vectors are. इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा तो मैं क्या बोला आपको, ये डिटर्मिनेंट रफ कॉलम में कहीं तो भी ऐसा कर लेके खाली वैल्यूज लिख देना. गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. बताओ 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा करते बता दिया ना मैं आपको. सेकंड एलिमेंट शुड बी माइनस ऑलवेज. अंडरस्टैंड. यस सर. अभी विल डू इट केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर 2x2 मैट्रिक्स. ऑफ कोर्स आइगन वैल्यूज का अगर आपको डाउट है तो मैं और एक क्लास भी करता हूं उसके लिए, बट अभी नाउ विल गो फॉर केली हैमिल्टन थ्योरम. वेरीफाई CAYLEY केली हैमिल्टन थ्योरम. और here the matrix is 1 4 2 3. मतलब एक 2x2 की मैट्रिक्स है, स्मॉल मैट्रिक्स है, 3x3 की नहीं होती तो आसानी से आंसर आ जाता. केली हैमिल्टन का 3x3 में भी करना है आपको. पहले तो मैं आज 2x2 का बता दे रहा हूँ. लेट अस अज्यूम दैट A is equals to 1 4 2 3. Same thing we have to find out what characteristic equation. The characteristic equation is mod of A minus lambda I is equal to 0. This implies that खाली डायग्राम में चेंज करना. 1 minus lambda 4 2 3 minus lambda is equal to 0. Determinant of 2x2 matrix AD minus BC. A is this one, D is this one, AD minus BC is equal to 0. This implies this is 3 1s are 3 minus lambda minus 3 lambda minus into minus plus lambda square minus 8 is equal to 0. We should write in order. Lambda square minus 4 lambda minus 5 is equal to 0. This is equation number 1. केली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? Every square matrix satisfy its own characteristic equation. So what do you say? जहां पर भी लैम्डा है उसको a से रिप्लेस करो. A स्क्वायर minus 4a minus 5 into constant के साथ identity matrix is equal to 0. Now this result you will get it 0. A स्क्वायर कैसा करते हैं अभी बता देता हूँ. A value is 1 4 2 3. आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो. A स्क्वायर मीन्स A into A. ये तो आपको 10th क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज यू कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो. 1 4 2 3 into 1 4 2 3. So first row first column method, multiplication of matrices. 1 1s are 1 plus 4 2s are 8. 4 1s are 4 plus 4 3s are 12. 2 1s are 2 plus 3 2s are 6. 4 2s are 8 plus 3 3s are 9. Your answer will be 9 16 8 17. ये आपको लिखना है एक स्क्वायर की प्लेस में. आप इसको कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो. 9 16 8 17 minus every element of A should multiply with 4. मतलब 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 3s are 12 minus 5 into identity matrix 5 0 0 5. 1 0 0 1 होता ना, लास्ट में आंसर आपको 0 0 लेके आना है.
अब देखो एक बार इसको सिंप्लीफाई करने का, 9 -4 -5, 16 -16 -0, 8 -8 -0, 17 -12 -5. Now if you look at, get 9 -9, you cancel it, a we cancel it, 0 0, 17 -17, cancel it, cancel it. Finally, you're getting your answer is 0 0 0 0 0. Hence, Cayley-Hamilton theorem verified. That's it. मगर अभी खाली 2x2 मैट्रिक्स में आपको बताया, 3x3 में पूछता एग्जाम में, 2x2 का चांसेस बहुत कम रहता, ठीक है, 3x3 का पूछता एग्जाम में। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का आप कैलकुलेटर को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। कहीं डाउट आ रहा तो बोलिए। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ। सपोज यू आर फाइंडिंग, एक आज एक स्टूडेंट को एक डाउट आया था, ये अभी अपन आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता, मे बी पॉसिबल दैट यू आर गेटिंग योर आइगन वैल्यू इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रूट्स नहीं आ रहे, समझो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा, सपोज लैम्डा इज इक्वल टू ऐसा कुछ आ रहा, 2 + 3i। इफ यू आर गेटिंग योर आइगन वैल्यू इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आइगन वेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। आप परेशान हो जाएंगे, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। मेथडिस्ट कॉलेज जो है, इसके क्वेश्चन पेपर का जो एक क्वेश्चन आया था, हम लोग दिए, आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन दिए, उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे, मतलब आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं होता, बहुत बच्चे परेशान है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, कैसे फाइंड आउट करना आइगन वेक्टर, फाइंड आउट नहीं कर सकते। आइगन वैल्यूज शुड एग्जिस्ट बट आइगन वेक्टर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल रहा आपको के रूट्स नहीं आ रहे, तो आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं होता। अभी अपने को और भी क्या करना है बोलते, ये 3x3 मैट्रिक्स पे करना है इसको, ये अपना कैली हैमिल्टन थ्योरम को 3x3 पे कन्वर्ट करना है। अभी मैं 2x2 पे करा खाली, कैलकुलेटर से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता आप लोग को, नहीं आता तो कल मैं बता दूं, कैलकुलेटर साथ में रखो, प्रोसीजर पूरा बताता हूँ। हु इज दैट राइटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन? सर वो गलती से टैप हो गया, सॉरी सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो नो डाउट फॉर टुडेस क्लास। सर वो ओके, हमें 23rd से मिड्स है सर, 2 दिन क्लास नहीं सुन पाते सर हम। आप मेरे को मैसेज करिए पर्सनली, अभी क्लास में करें ना, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है, वही बहुत जने सुनते हैं क्लास, ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ। सॉरी सर।